Welcome back, my dear students of grade 8. In this video, we are going to start our next chapter of geography, that is land and the soil resources. In this chapter, we are going to study about the land resources. And what are the reasons for land degradation, soil resources, soil degradation and methods of the soil conservation. Land is one of the most important natural resource and it is made up of rocks in solid form. Land covers about 29% of the total area of the earth's surface and remaining 71% is covered by water. That's why we see that the land is limited and we use that land for different purposes. All type of life forms and what are the resources that we need for our life that we get from the land, and what are these resources that are varied from the one place to another depending upon the different factors like relief features, climate, vegetation cover, social and economical diversity. Let us discuss these factors one by one. These are the physical and the human factors that affect the land use pattern of any area. Physical factors: topography, soil, climate, water, sunshine, and human factors: care, population and the technology. Land use and the factors that affect the land use pattern of any area. First is the topography. Topography means the different relief features of any area like mountains, valleys, plateaus determine what type of land use would be suitable. किस एरिया की लैंड किसके लिए यूज़ होगी, किस पर्पस के लिए यूज़ होगी, कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो डिसाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माउंटेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. अगर प्लेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. ईज़िली हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ सोइल. टाइप ऑफ द सोइल एंड इट्स प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन लैंड यूज़, कि उस एरिया की जो सोइल है वो कितनी फर्टाइल है, कितनी प्रोडक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की लैंड कैसे यूज़ होगी. अगर लैंड फर्टाइल है वी कैन यूज़ दैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फॉर एग्जांपल सैंडी सोइल दैट इज़ नॉट फर्टाइल, दैट इज़ नॉट यूज फॉर द एग्रीकल्चर. नेक्स्ट फैक्टर इज़ द climate. Climate includes temperature and precipitation of any area that also determine the land use pattern, that also affect the agriculture use of that land or the lifestyle of the people, कि वहाँ का एरिया का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ हो सकती है या नहीं, और लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा कि वहाँ की क्लाइमेट डिटरमाइन करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द टू कोल्ड एरियाज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो सकती. एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल आल्सो अफेक्टेड बाय दैट क्लाइमेट. नेक्स्ट इज़ द वाटर. People have mostly settled near the water bodies like banks of rivers and lakes of the sea coast. Water is a basic need for our life. That's why from the starting the people prefer to settle near the rivers. Sunshine is another factor that affect the land use pattern of any area. As we know, as we move away from the equator, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं और डे और नाइट का डिफरेंस बढ़ता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही कितनी सनलाइट मिलेगी उसमें भी डिफरेंस आ जाता है.
If an area receives a large amount of sunshine, then this help in the cultivation of 2 or 3 crops. As we know, sunshine is very important for the cultivation of any crops. Land use is generally referred to as land use pattern. Now, it is clear from the discussion that land use means the land use pattern, means for which purpose that land is used. Land is used for different purpose, agriculture, grazing land, or we making the houses, industries or forest, etc. Human factors also affect the land use pattern like population, care for land, technology, that also determine that how that land is used. For example, tribes in India consider land a community resource. उनके लिए land एक community resource है, सबके लिए है. So they prohibit felling of the trees and throwing any waste on their land areas. तो वो हमेशा अवॉइड करते हैं कि ट्रीज़ को कट नहीं करना है, ना ही लैंड को डिग्रेड करना है बाय falling the waste on the land. Now, see in this table, this is the land use pattern in different countries: croplands, pasture, forest and other uses. कैसी उनकी land use होती है. For example, in India 57% land is used for the agriculture, 4% for pasture, 22% for forest and 17% for other uses. Other uses mean making the houses, making the roads, making the industries, etc. These are the different land use pattern in the different countries. I hope today's lecture is clear to you. That is, what are the different factors that affected the land use pattern of any area. In the next video, we will discuss about the land degradation. Thank you for watching this video.